गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो केमती अच्छा आपण समस्ते पिला माने समस्ते टिके काइंडली जल्दी जल्दी जॉइन हो जातु जिते जल्दी आपण माने जॉइन हो जमे आम आमर आज मैराथन सेशन स्टार्ट करदे। समस्त को शुभ सकाळ एगेन। यस राहुल गुड मॉर्निंग। अर्चना समस्त जल्दी जल्दी जॉइन हो जाओ जिते जल्दी जॉइन हो जाओ आज सेशन आम से जल्दी स्टार्ट करदे। क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो गला से पचार क्लास केते स्टार्ट हम तो क्लास स्टार्ट करने पूर्व समस्त गोटे न्यूज कही दिए क्लास वन आवर रुद्रप्रिया महालिक ओके देखिबा रुद्रप्रिया कि लास्ट क्लास रे हमर 1 आवर कौन करबा आमे केवल क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा एंड हाफ एन आवर तम मानक पई गोटे जिंस मु कहबी कि तमे माने जदि किछि टीचिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड तमर जा सिलेबस अछि किछि भी डाउट अछि मते क्वेश्चन करबो। अदरवाइज मु तम मानक आधा घंटा टोटली आधा घंटा क्वेश्चन करबी केवल क्वेश्चन पुट करबी एंड कमेंट बॉक्स रे तमे मते आंसर दबो। आज हमें गोटे रिकैप सेशन करबा जोथरे कि तमे माने क्वेश्चन आंसर मते दबो एंड जदि तमर किछि प्रॉब्लम अछि मु सॉल्व करबी। ओके शुभ प्रभात। अच्छा रुद्रप्रिया तमर कोन सिटी को नै कि प्रॉब्लम हेछि समस्त को गुड मॉर्निंग मैम मु आसी गली। ओके चिन्मय वेलकम। कौन प्रॉब्लम है सिटी को लेकिन एबे कई जने कहउथिले सिटी को लेकिन मोर प्रॉब्लम है तो रेडी था समस्ते कि तम माने मते क्वेश्चन आंसर दब अदरवाइज मते क्वेश्चन पचारिबो। मैम ऑप्शन को सिटी आछि रुद्रप्रिया हाँ मु भी शुणुली किछि किछि गोटे गोटे जनकर कहार कहार एपट सेपट सिटी आसी पिला माने देखो जोठी तुमर एबे सिटी आसी गले ना सेठी एग्जामिनेशन हबो तुमको तो बाध्य देबाको पड़िबो। तो मोर गोटे जिनस जार सुविधा अछि से सकाळु आसीबा कथा भाबो नले गोटे दिन बिफोर आसिकी तुम माने जोठी तुम सेंटर पडुची लोकालिटी केना एथर को जेहेतु तुमर सीबीटी बेस्ड एग्जाम हबो से कोठी भी रैंडमली पकई दीची। ओके कौन है आशीष गुड मॉर्निंग समस्त को गुड मॉर्निंग एंड समस्त रेडी था आज आम क्वेश्चन आंसर सेशन पाई मैम मोर सिटी आसीनी आसी जीवो किछि नहीं मैम 2 days बिफोर रिपोर्ट करने को हबो 2 days बिफोर कहीं रिपोर्ट करिवो जो दिन तमर अच्छी तमर एग्जाम अच्छी से दिन सकाळु ही तमर रिपोर्टिंग टाइम ही तमर एडमिट कार्ड रे लिखा हितबो दी दिन बिफोर कहीं रिपोर्ट करबो। अरे आशीष तुम्हें जाओ भल है ना कालकाटा बुली के आसीबो। मैम मोर नॉर्मल मैसेज रे आसी बट ईमेल ले किछ इन्फॉर्मेशन आसीनी इट्स ओके जो मानो को एबे इन्फॉर्मेशन आसी गलानी तो से माने निजे निज को प्रिपेयर रखो कि इन्फॉर्मेशन आसी गलानी आमे हे हिसाब रे हमको प्रस्तुत रखिबा कि हमर एठी एग्जामिनेशन सिटी पड़ी छि सेही हिसाब रे हमको जिबार अछि आ हमको एग्जाम दबार अछि। ओके मैम किछि सॉल्यूशन नहीं कहंतु ठीक अछि हमें डिस्कशन करबा क्लास लास्ट को आसीस तो एबे डेरी न करके हमें हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करबा हमको टाइम आहुरी आधा घंटा मिलेबो सेही टाइम रे मध्ये हमें डिस्कशन करि परिबा। तुम्हें चाहिए मेल करी परिबो आरआई को थरे आरआई को मेल करके देख तुम प्रॉब्लम टा जणाओ तुमको मेल रो बैक मिलिबो निहाती तो तुम फास्ट मेल कर आरआई रो ईमेल आईडी को कहीं हमर एया प्रॉब्लम हेची हमें एई सिटी पकेइचु किंतु हमर एई सिटी आसी जाईची हमें एई सिटी पकेइ नाहु तो हमको प्रॉब्लम होउची तो तुमको रिप्लाई रे कोन आसुची सेटा ट्राई करके देखो। ओके सिटी इंटिमेशन गोटे आसी थाए आसीस से सिटी इंटिमेशन तुम आरआई वेबसाइट को जाइकी तुम एनरोलमेंट नंबर मारिकी तुम्हें तुमरो सिटी इंटिमेशन लेटर चेक करि परिबो। ओके ठीक अछि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट गोटे क्लासरूम मैनेजमेंट रो प्राइमरी गोल कौन रहउची टू मेंटेन साइलेंस इन द क्लास केवल क्लास रे साइलेंस मेंटेन करिबा ना टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम केवल सिलेबस टा टाइम रे कंप्लीट करिबा ना टू क्रिएट ए कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट गोटे कंड्यूसिव लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करिबा और टू पनिश डिसरप्टिव स्टूडेंट्स
ना जो माने डिस्टर्ब करूछंदी से स्टूडेंट मानन को पनिश करबा सारे तो स्लो yes option C to create a conducive learning environment पूरा अलग आसी से तीनटा ऑप्शन हो किछु ए समस्ते तुम माने मु जहा कहली से ही करो एते व्यस्त हुओनी कि हमर अलग गोटे सिटी आसी छी तमे मेल ही करो एबे लास्ट ऑप्शन कि आरआई को मेल करबा ओके मेल करके देखो कहीं ना एबे भी टाइम अच्छी तुम पाखे 1 वीक पाखा पाखे देन तापर देखिबा रेस्पॉन्स कोन आसुची देन क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर प्रिवेंटिंग क्लासरूम मिसबिहेवियर को प्रिवेंट करबा पई कोटा गोटे इफेक्टिव प्रोसेस ऑप्शन ए सेंडिंग स्टूडेंट्स टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस गोटे स्टूडेंट को प्रिंसिपल ऑफिस को पठेई दबा ना क्रिएटिंग एंगेजिंग एंड मीनिंगफुल लेसन क्रिएट करबा ना असाइनिंग एक्स्ट्रा होमवर्क ना ताको एक्स्ट्रा होमवर्क प्रोवाइड करबा ना ऑप्शन डी इग्नोरिंग द बिहेवियर ना से बिहेवियर टा को इग्नोर करबा पिला माने काइंडली एबे मोर गोटे रिक्वेस्ट क्लास एबे होउची तमनु कहिली तमने एबे से सेम जिंस डिस्कशन काहे की करूचो क्लास रे पाठटा पाठ पढ़ी सारला पर आउरी आधा घंटा तमनु टाइम देबी कहिची सेते बेले तमरो प्रॉब्लम तम टेंशन की किछि कहार कोठी पड़िला सेते बेले डिस्कस करिबा एबे क्लास होउची तमरो क्वेश्चन आंसर सेशन न तो क्वेश्चन आंसर ऊपर ही फोकस करो जहा डाउट अछि पर कहबो क्लास रे डिस्टर्ब करनी यस ऑप्शन बी that is creating engaging and meaningful lesson to preventing classroom misbehavior jete bele yes option B hochi right next dekha according to V.F. Skinner classroom behavior is best managed by which method punishment na observation na reinforcement na ignorance बीएफ स्किनर का मतरे क्लासरूम बिहेवियर टा केमिति मैनेज हेई परिबो पिला माने ओके यस ऑप्शन सी रेनफोर्समेंट अच्छा बीएफ स्किनर को थ्योरी देइथिले ताले एबे समस्त कुह बीएफ स्किनर का थ्योरी नाटा कोन कुह तापर आको को जीवा बीएफ स्किनर का थ्योरी नाटा कोन यस रेनफोर्समेंट इज करेक्ट बट बीएफ स्किनर को थ्योरी देइथिले पिला माने ट्रायल एंड एरर नुआ ट्रायल एंड एरर होछि ने थंडेक वीएफ स्किनर देइथिले कोन ना ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ओके यस ऑपरेंट कंडीशनिंग नेक्स्ट जीवा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोएक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कोटा ऑप्शन ए डिटेंशन केवल डिटेंट करबा ना वार्निंग कार्ड्स प्रोवाइड करबा ना सेटिंग क्लासरूम रूल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लासरूम रूल्स रेगुलेशन क्लास रो फास्ट रू क्रिएट करबा ना स्कोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ पियर्स छुआ मानकर पियर्स सामने रे तांकू गाली करबा यस ऑपरेंट कंडीशनिंग yes option C is the correct answer setting classroom rules at the beginning of the lesson or beginning of the year जोटा कौन हबो गोटे प्रोएक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी माने गोटे इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी हेई परिबो जदी हमें स्टार्टिंग रो हमर गोल्स ऑब्जेक्टिव्स रूल्स नॉर्म सब फिक्स करूचे ओके नेक्स्ट द टीचर नोटिस दैट A student is consistently disruptive during group activities गोटे student classroom time रे group activities time रे disruptive आवा negative activities create करूची the most effective first step is ताले सेठी teacher रो first step कौन हबो ऑप्शन ए रिमूव द स्टूडेंट फ्रॉम द ग्रुप वर्क ताको से ग्रुप वर्क को रिमूव कर दबा आउट कर दबा और डिस्कस बिहेवियर एक्सपेक्टेशन प्राइवेटली तार बिहेवियर विषय ता सहित प्राइवेटली गुप्त भाव में कथा हबा ताको एक्स्ट्रा डाकी की ना सेंड द स्टूडेंट टू द हेडमास्टर ना ताको एचएम को भागु छाड़ी दबा ना ऑप्शन डी इग्नोर द स्टूडेंट सी तार ग्रुप बिहेवियर जहा करूची करू हमको आउ बाकी पिलांगु ने कि ग्रुप बिहेवियर को सारीबार अछि ग्रुप वर्क को कंप्लीट करियार अछि तो ताको इग्नोर कर दबा कोडा हबो पिला माने मोटे स्पीड पळौची तम माने को टाइम दरकार ना ठीक अछि ठीक आंसर दबो समस्ते
स्पीड जाऊँ तुमको टे टाइम दरकार ना ठीक अच्छी माने पढ़ाइबाटा ठीक अच्छी ना स्पीड पलाऊँगी ओके यस ऑप्शन बी डिस्कस द बिहेवियर एक्सपेक्टेशन प्राइवेटली सी कहीं एमती बिहेवियर देखो क्लासरूम सिचुएशन ने तो ता सहित जिते आज ए टीचर आम प्राइवेटली कंसल्ट करवा टिके स्पीड जाऊँ मैम ओके ठीक अच्छे विष्णुप्रिया तो क्लासरूम में जिते आम प्राइवेटली डिस्कस करवा कौन हम से बुझी पार ना ए बिहेवियरटा मत करवा उचित नुह एंड आम बुझी पार सी कहीं एमती बिहेवियर करूँगी नेक्स्ट कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम रूल्स कोटा गोटे इफेक्टिव क्लासरूम रूल्स रो कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू एंड जनरल created only by the teacher na few positively stated and consistently enforced na numerous and strict कोटा पिला माने yes option C few positively stated and consistently enforced next a teacher wants to minimize noise को minimize करबा को चाहउछनी and maximize participation more participation पिलांगर चाहउछनी during classroom discussion समय रे which technique is most appropriate ताले ए जिनसट पई को टेक्निक ता appropriate ऑप्शन ए use of talking stick or microphone ना call only on the top performing students ना option C allow free discussion with no limits option D punish those who speak out of turn कोडा हबो एटा ही ओनली लेवल 1 पाई हो कि ना शुभ लेवल 1 लेवल 2 एटा मु सिलेबस वाइज तुमरो क्वेश्चन आंसर करूची एंड मु सेति लगी ही कहली कि लास्ट को हमें डिस्कशन करबा डिस्कशन करि सारिले ही आमे जानि परिबा कि हमर कोठी लैकुना रहउची कोन होची एटा सिलेबस वाइज ही तमरो टीचिंग एप्टीट्यूड डिस्कशन होउची तो केही भाबंतुनी कि एटा कोन केवल लेवल 1 के लेवल 2 एई सब क्वेश्चन ही आपन को सबुथिरे आसुची केवल लेवल 2 रे आपन मानकर आसुची जेमति कि एई थ्योरीटा किए कहिथिले कि कोन से सब जिंस गोटे यस एइथिरे ऑप्शन ए पिला माने हबो नॉइज को कंट्रोल करिया पई यूज ऑफ टॉकिंग स्टिक और माइक्रोफोन यूज करिवे एंड सेइथिरे पिलांका मैक्सिमेशन अलाउ फ्री डिस्कशन विथ नो लिमिट्स एटा गोटे क्लासरूम सिचुएशन ने हेई परिबो नाही ओके नॉइज को मिनिमाइज करिया पई जदी तमे नो लिमिट्स रे एठी जो जिंसटा तमे ठीक कहछ फ्री डिस्कशन हबो किंतु जेतेबेले नो लिमिट्स दबो सेतेबेले तो तमरा एई नॉइज टा हे जबो ना आमे एठी कोन कहछे मिनिमाइज आमे नॉइज करबा एंड मैक्सिमाइज पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन ओके जे भी स्पीड कहूच ए सेशन एथ लगी होउची कि पिला माने निजे केमती बुझी पारिबे पिले तमे एठी किए हायर इंटेलिजेंट थिबो आई डोंट नो मु कार इंटेलिजेंस लेवल टेस्ट करिनी समस्ते केमती बुझी पारिबे सेही अनुसार पढ़ा चली जी ओके क्वेश्चन नंबर व्हाट इज विथ हिटनेस इन क्लासरूम मैनेजमेंट कॉइन्ड बाय कोनिन ऑप्शन ए a teacher's ability to be friendly option B a teacher's awareness of what is happening in all parts of the classroom option C a teacher's ability to give good lectures option D a teacher's tendency to be strict yes option B correct answer a teacher's awareness of what is happening in all parts of the classroom okay next what should a teacher do if a student frequently interrupts the class जदि क्लास रे frequently interrupts करूची ताहले कौन हबो option A ignore the student completely option B yell at the student to stop option C establish and reinforce appropriate behavior expectations option D send the student to detention immediately okay
Option C is the correct answer. Establish and reinforce appropriate behavior expectations. Next chiba pila mane, which strategy supports classroom management through student involvement? Student involvement द्वारा classroom management को strategy रे हेई परिबो. Option A, allowing students to design classroom rules. Option B, giving rewards for silence. Option C, sitting all students alphabetically. Option D, giving punishment during every period. कोटा हबो पिला माने कि which strategy supports classroom management through student involvement? कौन बी सी कहूच बी केमती हम गिविंग रिवार्ड्स फॉर साइलेंस तमे रिवार्ड्स दे देले पिला माने साइलेंस बसी जिवे एटा गोटे रूल्स. ऑप्शन सी सिटिंग ऑल स्टूडेंट अल्फाबेटिकली बसई देले क्लासरूम मैनेजमेंट हे जिवो. गिविंग पनिशमेंट ड्यूरिंग एवरी पीरियड तमे जदी पनिशमेंट दोछ ताले हे जिवो. टिके भाबो कोडा हेई परिबो ताहेले. Which strategy supports classroom management through student involvement पचारिचे student involvement एटी देखो तो एटा कौन करिबो. ऑप्शन ए राइट आंसर. allowing students to design classroom rule. जते बेले आमे क्वेश्चन ने ही हमकु पचारि देछि आंसर कि स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट द्वारा क्लासरूम मैनेजमेंट आमे केमिति करि परिबा तो सेटा हबो allowing students design classroom rules. giving rewards for silence. rewards किए दोछि टीचर दोछंदी तो क्वेश्चन बुझ एंड आंसर दियो. क्वेश्चन ने तुमको पचारनी टीचर कौन करबा दरकार. टीचर पचारि थिले तमे ए भितर कोडा कोडा आंसर देई थानो तापर भाबी थांदे ठीक है भी भूल हबो. सेठी पचारछि थ्रो स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट तो थ्रो स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट रे आंसर होछि अलाउइंग स्टूडेंट टू डिजाइन क्लासरूम रूल्स. ओके नेक्स्ट बा क्वेश्चन व्हाट इज dyslexia primarily associate with? ऑप्शन ए डिफिकल्टी इन राइटिंग. Option B, difficulty in reading. Option C, difficulty in math. Option D, difficulty in speaking. कोटा हबो हो those who think these are easy question go for the hard questions. yes difficulty in reading जोड़ा कि तुमको उल्टा पलटा देखा जिवो. okay question number, a child who has trouble forming letters, spacing words or writing legibly may be suffering from which disability? dyslexia, dyscalculia, dysgraphia or ADHD. कोटा yes विशाल ए सब तुमको ग्रुप बी पाई भी हेल्पफुल होबो. तुमरो गोटे सेम सिलेबस तुमे देखुछ जोटे सिलेबस सेम तुमे क्वेश्चन पैटर्न भी देखाओ. हम जदि मु तुम मानकु क्लासेस सरिले तार लिंक पठे देबी कि को वेबसाइट रो तुमे क्वेश्चन पाई परबो. तुमे देखि देले तमरो विश्वास हे जबो. यस ऑप्शन सी दैट इज डिस्ग्राफिया. ओके लेखिबा जिंसडा. देन नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी इज रिलेटेड टू डिफिकल्टीज मैथ कांसेप्ट. मैथ को सॉल्व करिया पई कोटा गोटे डिफिकल्टीज डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्काल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया. कोटा हबो मैथ कैलकुलेशन बाय yes option C dyscalculia. calculation math means dyscalculia. okay very good. next ba which symptom is most characteristics of dyslexia? option A mixing of math symbols. option B reversing letters when reading or writing. option C avoiding physical activities. option D poor concentration. कोटा हबो पिला माने yes ऑप्शन बी रिवर्सिंग लेटर्स व्हेन रीडिंग और राइटिंग. जमती बी टा तुमको डी भलिया देखा जिवो सेही भलिया जिंस पिला माने. नेक्स्ट कि a student has difficulty copying from the board and often forgets how to form certain letters. This is a sign of what? dysgraphia, dyslexia, dyscalculia or autism. बी केमती हम ये तुमको राइटिंग कथा बा पचारि
कोथिरे तुमको राइटिंग प्रॉब्लम देखा जाए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर डिस्ग्राफिया तमे किछि जिंस कॉपी करूछ राइट करूछ किछि गोटे लेखुछ तो सेटा कोन शो करछि डिस्ग्राफिया बा तमरो राइटिंग डिजेबिलिटी को शो करछि तो ऑप्शन ए हबो करेक्ट आंसर बी काहे कि दोउछ तम माने प्रीवियसली 3-4टा क्वेश्चन एथुरे ही करके आसलनी स्टिल तमरो डाउट रहउछि कोटा नेक्स्ट क्वेश्चन ए चाइल्ड हु अंडरस्टैंड मैथ कांसेप्ट ओरली but struggles to write numbers or perform calculation may have dyslexia, dyscalculia, dysgraphia or dyspraxia. कोटा पिला माने yes option B राइट आंसर डिस्कालकुलिया एंड यस जी भी एबे मते पचारुच कहीं माइंड को नमनी मु ए जिनसटा कहूची बोली किंतु सपोज तमे एबे पचारुच मैम केते मार्क जीवो तमरा 1 वीक एग्जाम रहिला मु एना कहिबी तुमको 160 रु 150 रखिबा को हबो तमे एबे 1 वीक रे 150 रखी दबो की रखी पारिबनी तो सही क्वेश्चन टा तमने क्लास न करे के आंसर न देई की तमे काहे के ए सब जिंस बार बार कहूच सो क्वेश्चन आंसर ऊपर ही फोकस करो तुमको प्रैक्टिस करियर अछि तुम एबे दी दिन रे किछि मार्क रखी दबनी सो मार्क कथा मुंडर भाबो केते परिश्रम करि परिबो 1 वीक भितरे सही कथा भाबो ऑटिज्म डिसऑर्डर होउची तम मनकर एबनॉर्मलिटी माने तमे किछि बुझी पारु नथबो तमरा क्लासरूम रे एबनॉर्मलिटी देखा जिवो ऑटिज्म डिसऑर्डर थिले ओके नेक्स्ट होउची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्पटम ऑफ डिस्लेक्सिया Option A difficulty in decoding words, option B poor reading fluency, option C difficulty with spelling, option D difficulty with physical coordination. कोटा हबा पिला माने yes option D that is difficulty with physical coordination ए भितरे सिम्पटम तार नुह किंतु ताको डिकोडिंग वर्ड्स प्रॉब्लम हबो पुअर रीडिंग फ्लुएंसी ऑब्वियसली से रीडिंग जेहेतु देन डिफिकल्टी विथ स्पेलिंग मध्य हबो किंतु डिफिकल्टी विथ फिजिकल कोऑर्डिनेशन ए जिंसटा देखा जिवो नाही नेक्स्ट पिला माने डिस्ग्राफिया कैन अफेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोटा को अफेक्ट करे वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन ऑप्शन बी एबिलिटी टू सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स ऑप्शन सी नीटनेस एंड कंसिस्टेंसी इन हैंडराइटिंग ऑप्शन डी verbal fluency yes option C neatness and consistency in handwriting okay next question which of the following tools can help a child with dyslexia calculator audiobooks graph paper और फिडजेट स्पिनर कोटा पिला माने ट्राई करिबा रुद्रप्रिया डेली क्लासेस रखिबा पाई यस ऑप्शन बी दैट इज ऑडियो बुक्स नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट क्लासरूम स्ट्रेटजी बेस्ट सपोर्ट्स ए चाइल्ड विथ डिस्कालकुलिया को स्ट्रेटजीटा डिस्कालकुलिया थिबा पिला को सपोर्ट करि थाए ऑप्शन ए रिपीटिंग द सेम मैथ प्रॉब्लम्स ऑप्शन बी यूजिंग रियल लाइफ विजुअल एड्स एंड मैनिपुलेटिव्स ऑप्शन सी असाइनिंग मोर होमवर्क ऑप्शन डी इग्नोरिंग द डिफिकल्टी कोटा हबो डिस्कालकुलिया को सपोर्ट करिबा पाई कोटा बेस्ट स्ट्रेटजी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर पिला माने यूजिंग रियल लाइफ विजुअल एड्स एंड मैनिपुलेटिव जोटा कि पिला मानकु हेल्प होबो जोटा कंफ्यूजन होउची कोनसी कैलकुलेशन करिबा पाई से माने कैलकुलेशन इजीली करि परिबे जते बेले तमे गोटे टीचर हे कि तांकर रियल लाइफ विजुअल एड्स जते बेले हमें कहूचे टीचिंग लर्निंग मटेरियल से टीचिंग लर्निंग मटेरियल को यूज करबा द्वारा से मानको बेटर अंडरस्टैंडिंग हेई परिबो एंड सेटा तमरो कैलकुलेशन ने हेल्पफुल हबो ओके नेक्स्ट Which professional is most suited to diagnose dyslexia? को professional टा pediatrician ना occupational therapist option C special educator or psychologist और option D school principal मैनिपुलेशन माने गोटे जिनसर चेंजेस करि परिबो तमे जनरलाइजेशन निजे मैनिपुलेट करि
आदित्य मु बार बार मेसेजटा देखुची मु आउ थरे कहि परिबि नाही तम मानको एटा तम माने जिए भलो भाबो कि खराब भाबो क्लासरूम रे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर जेपर्यंत क्वेश्चन आंसर डिस्कशन न सरिछि तम माने केही किछि भी पचारले मु कहिबिनी मु कहि देछि कि लास्ट आधा घंटा तम मानकर क्वेश्चन आंसर सेशन पई तम मानको छाड़ीबी सेते बेले पई वेट करो एमती बार बार मेसेज करबा द्वारा अलगा पिला माननको भी डिस्टर्ब होउची सो काइंडली बुझिबा को चेष्टा करो यस ऑप्शन सी स्पेशल एजुकेटर बा साइकोलॉजिस्ट किछि भी प्रॉब्लम हेले तुमरा डायग्नोस करि पारिबे नेक्स्ट which learning disability may lead to poor spacing between words and inconsistent letter sizing in writing option A dyslexia option B dyscalculia option C dysgraphia option D ADHD कोड है yes option C dysgraphia next which of the following is a common misconception about dyslexia कोड misconception बा doubt रहुची it affects reading it is a sign of low intelligence option C it involves difficulties in phonological processing option D it can improve with support कोटा रहुची मिसकनसेप्शन कि डिस्लेक्सिया द्वारा ए जिनसटा होउची आम मनरे भ्रांत धारणा पसिकरी अछि ना एटा होउची yes option B it is a sign of low intelligence केवल low intelligence पिला माने नुहंती कि तांकर रीडिंग डिसऑर्डर रहुची ओके ए डिसेबिलिटी स्पेसिफिक पिलांग पाखे थाए जहार भी प्रॉब्लम होउची किछि किछि स्पेसिफिक पिला नाइ कि मु लो इंटेलिजेंस त मोर रहिबो डिसऑर्डर प्रॉब्लम व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन आंसर दिया समझते कोटा प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन yes option B assessment focuses on learning evaluation focuses on grading माने कोन सॉरी मो पाटर भूल हे गला ग्रेडिंग माने कोन लर्निंग को तुमको असेसमेंट केमिति फोकस करबो कि असेसमेंट ता होउची गोटे ऑनगोइंग प्रोसेस असेसमेंट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस पिला माने जोउतरे आमे ऑनगोइंग एग्जामिनेशन सिस्टम करथाउ जोटा तमनको हेल्पफुल हबो ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि which of the following is an example of formative assessment कोउटा गोटे formative assessment रा example final board examination unit test at the end of the year weekly quiz to monitor progress or annual sports competition yes very good weekly quiz to monitor progress next key summative assessment is generally conducted when at the beginning of the instruction in the middle of the course continuously throughout the year at the end of the unit or course code ऑप्शन डी एट द एंड ऑफ द यूनिट और कोर्स समेटिव आमे जतले गोटे ग्रेड बा गोटे सर्टिफिकेट पिला को दउचे केमा नेक्स्ट क्लास को प्रमोट करूचे सेटा एट द एंड ऑफ द यूनिट और कोर्स रे आमे करूचे सेटा होची समेटिव इवैल्यूएशन बा असेसमेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टाइप इज मोस्ट डायग्नोस्टिक इन नेचर कोडा पिला माने प्री टेस्ट मिड टर्म टेस्ट असाइनमेंट पोर्टफोलियो एंड ए चारटा को भितर जदी किछि न बुझी पारुचो एबे पचारो आंसर दिया एंड जदी के न बुझी पारुचो क्वेश्चन करो
यस मैम टेस्ट मीन्स माने कौन तमे क्लास रे ओके कहूँ क्लास रे तमे गोटे टेस्ट कंडक्ट करछो कि नहीं तुम जो यूनिट टेस्ट होची परीक्षा करबा 20 मार्क रो 25 मार्क रो हैला से जो परीक्षाटा करछ एंड कौन असाइनमेंट माने कौन तुमको मुझे देली तुमको गोटे क्वेश्चन देली तुम घर को देदेली कि तुम 5 पेज रो 10 पेज रो कौन करिवो लेखिक आनिब तुमर एटा रहउची 15 मार्क बा 20 मार्क्स कि 10 मार्क्स कि 5 मार्क्स जहाँ भी आज ए टीचर सेटा कौन मु तुमको असाइन कली तुम से जिनसटा लेखिक आनिब एंड मिड टर्म टेस्ट तो तुम समस्ते जानिछ एंड पोर्टफोलियो पिला माने पोर्टफोलियोटा बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर करि परिबे मने रखि थाओ फास्ट कहि दोची आर आंसर होची प्री टेस्ट ओके नेक्स्ट डिस्कशन करबा पोर्टफोलियो कौन पोर्टफोलियो एटा पिला माने जोटा कि तमे टीचर एंड स्टूडेंट सिस्टमैटिकली ए सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ वर्क्स माने कौन स्टूडेंट धर किसी गोटे बेस्ट वर्क होती थ्रू आउट द ईयर तो से जिनसटा आम कौन करवा सिस्टमेटिकली कलेक्ट करके रखा एंड आज ए स्टूडेंट तमें तुमको लगुच कि मोर यही वर्कटा मत कलेक्ट करके रखार अच्छी थ्रू आउट द ईयर मुझे जिनस मोर एनहांसमेंट कली ए स्किल डेवलपमेंट कली ताहले मुझे कलेक्ट करके रखी ओके मैम कौन मैम सी कौन हो पारनी ओके ये कौन देख देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टाइप इज मोस्ट डायग्नोस्टिक इन नेचर पिला माने डायग्नोस्टिक माने कौन डायग्नोस्टिक टेस्ट केते बेले करा जाए बिफोर किछि पढ़ाइबा पूर्व टीचिंग बिफोर एनी इंस्ट्रक्शन डायग्नोस्टिक माने कौन तमे जेते बेले गोटे डॉक्टर बाहागु पिला माने जाउछ सेते बेले डॉक्टर कोन डायरेक्ट तुमको मेडिसिन दे दोछनी धर तुमरे पेट रे किछि गोटे जिंस होइजी पचारछन कि नहीं कौन खाइथिलो खाइबा प्रोसीजर कौन तुमरो ठीक से सब जिंस होउछि कि नाही तुमरो केमिति पेट काटुछि कौन सब जिंस तुमको पचारे कि डायग्नोस करि सरला परे तुमको गोटे टैबलेट दोछंदी कि एई जिंसटा तुमे खाइबा द्वारा तुमरो भलो होई पारिबो तो एडा होछि बिफोर इंस्ट्रक्शन तो गोटे अच्छे प्री टेस्ट माने कौन पूर्वर तुम जो टेस्टा कर सपोज तुम मैथमेटिक्स कि साइंस रो गोटे चैप्टर पढ़ाया चाहछ सेटा पढ़ाई जा पूर्व जो टेस्टा करुच सेटा कहूँ प्री माने किसी गोटे पढ़ाइबा पूर्व तुम से टेस्टा करके पिलांकर इंटेलिजेंस लेवल को जानिकी पिला भल भाव डायग्नोस कर सारी जाऊच सो दैट ऑप्शन ए इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर सेटा प्री टेस्ट एंड असाइनमेंट सेते बेले तुम दे पारिबो जेते बेले तुम गोटे टॉपिक को पढ़ाउच ओके yes ज्योतिस्मिता नेक्स्ट जीवा क्लियर हैला आशा करूची क्लियर हेई थिबो The term CCE in Indian school education stands for what? Continuous and comprehensive evaluation, central curriculum evaluation, child centric education or competency and criterion based evaluation. Yes, continuous and comprehensive evaluation. And yes, dyspraxia जो कहूली dyspraxia means पिला माने तुमरो problems in coordination, problems in motor coordination. बेसिकली एथरे कौन प्रॉब्लम हुए कि तुमरो फाइन मोटर स्किल जोटा राइटिंग जिनसटा रहउची कि आर्ट करिबा फाइन मोटर स्किल्स तुमर कौन सी फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट रे जिनसटा प्रॉब्लम करि थाए प्रॉब्लम्स इन योर कोऑर्डिनेशन आमे जो कहूचे मोटर मूवमेंट आमर मसल मूवमेंट होउची फाइन मोटर स्किल जो आमे किछि लेखुचे किबा किछि ड्राइंग करूचे तो ए डिस्प्रेसिया द्वारा पिला को फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट रे प्रॉब्लम हेइ थाए डिस्प्रेसिया क्लियर बार बार कहि जने पचारुथिले डिस्प्रेसिया ना 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 जगन प्री टेस्ट मीन्स नुआ कि जो जिनसटा होची प्लेसमेंट असेसमेंट प्री टेस्ट माने पिलार नॉलेज जानिया पई तमे एज अ टीचर जोटा करूछ ओके देन होची कोन पचारथिलो एडीएसटी अटेंशन डेफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिजॉर्डर इतरे कौन होता है पिला माने या ना रे ही अच्छी देखो अटेंशन डेफिक्ट हाइपर एक्टिविटी तम मानकर कौन हम
कि अटेंशन स्पान रहिबो नाही क्लासरूम में धर टीचर पढ़ाउछंती नॉर्मल स्टूडेंट को भली तमरा अटेंशन स्पान रहिबो नाही एंड कोन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर तुमे किछि एबनॉर्मल एक्टिविटीज शो करिवो क्लासरूम रे नॉर्मल पिलांक ठारू ओके यस राजलक्ष्मी नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्लियर हैला जे कि बार बार क्वेश्चन पचारथिले Which type of assessment tool is best for evaluating psychomotor skills? कोटा psychomotor skills रो evaluation जिनसडा multiple choice test, easy writing करेनी, essay writing, option C observation checklist, option D oral interview. कोटा पिला माने inclusive education आसीबो त्रापस प्रधान Which type of assessment tool is best for evaluating psychomotor skills? Psychomotor skill टा मैम वी प्लस आप रे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिली पारिबो कि नहीं RIE CEE 2 हाँ मिली पारिबो धीरज आप रे एटा ऑप्शन सी पिला माने हबो ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट जो माने डी कहउछ हबो नहीं जो माने सी कहउछ ठीक हबो केमिति देखो साइकोमोटर एक्टिविटीज गुडा को तमे कोन करि परिबो इवैल्यूएट केमिति करि परिबो साइकोमेंट सेठी तम फीलिंग्स में मध्य किछि किछि अछि साइको थिंकिंग पावर मते किछि किछि ऐड अछि ता सहित तुमरो मोटर एक्टिविटी तुमरो फाइन मोटर स्किल हो किमा तुमरो कोनसी राइटिंग हो तो सेही आठ जिंस गुडा को आमे केमिति तमको कैलकुलेट करबा ना ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट मु किछि क्राइटेरिया करिथिबी सेही अनुसार चेकलिस्ट मींस कोन मो क्राइटेरिया अनुसार मु तुमको मार्किंग करिवि तो मु थ्रो ऑब्जर्वेशन तमरो विभिन्न साइकोमोटर एक्टिविटीज को देखि कि बेस्ट जज करि परिबि ओरल इंटरव्यू तमे साइकोमोटर मोटर एक्टिविटीज को देखिले जज करिवो ना तमे ओरल इंटरव्यू मु पचार देबी तोर ड्राइंग भलो हुए एंड तमे कहि दबो यस मैम मोर ड्राइंग भलो हुए त माने कोन मु तुमको 5 रु 5 देई देबी मु केमति जानले तमरो ड्राइंग भलो हुए देन एसे राइटिंग रे खाली तमे साइकोमोटर एसे राइटिंग रे कोन सब साइकोमोटर एक्टिविटीज ता आसी जिवो आसीबोनी एसे राइटिंग रे केवल ता एसे राइटिंग ता केमिति होउची तमे माने देखि पारिबो ओके देन होची मल्टीपल चॉइस टेस्ट रे किछि भी साइकोमोटर एक्टिविटी कथा आसु नाही सेटा गोटे एग्जामिनेशन सिस्टम ओके तो सेथि लागि आंसर सी हबो ऑब्जर्वेशन से देछि साइकोमोटर स्किल्स माने जत्ते सारा साइकोमोटर स्किल्स अछि सब साइकोमोटर स्किल्स को तमे बेस्ट इवैल्यूएट केमिति करि पारिबो ओके नेक्स्ट क्लियर हैला तापस आशीष साहू मैम सीआईटी केमिति जणा पड़िबो ता पय भी लिंक सेंड करबे मैम ओके ठीक अछि In Bloom's taxonomy, evaluation belongs to which domain? Bloom's taxonomy रे evaluation टा को domain ने आस्था है पिला माने affective, psychomotor, ना cognitive, ना emotional. को domain ने पिला माने 12:30 जाए क्लासेस हबो yes cognitive ताले ब्लूम टैक्सोनॉमी रो जो इवैल्यूएशन गोटे फेज हैला आउ बाकी पांचटा फेज कोन हबो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रो टिके पिला माने आउ बाकी पांचटा फेज कहि दियो टिके काइंडली कॉग्निटिव रो आउ पांचटा फेज कोन कोन रिवाइज भी हे जिवो त माने कहैबा को ट्राई करो इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इवैल्यूएशन गोटे आउ बाकी पांचटा कोन तार स्टेजेस बा कैटेगरी कोन रहिछि कॉग्निटिव रो यस आई नो कि कॉग्निटिव रेटा त माने जानिछो ताले आउ पांचटा स्टेजेस कोन कोन जल्दी जल्दी knowledge understanding application analysis synthesis evaluation very good Jyotismita next jiba then full length test 6 रा हमर किछिटा क्वेश्चन आपण मानक पई कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट गोटे क्लासरूम मैनेजमेंट रा प्राइमरी गोल कोन टू मेंटेन साइलेंस इन द क्लास टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम टू क्रिएट एटा नुह पिला माने टिके वेट करो पिला माने जस्ट 5 मिनिट वेट करि थाओ क्लास स्टार्ट करबा पिला माने जस्ट 5 मिनिट वेट करो
हेलो एवरीवन एट घर कर दियो आरआई रे पाइले देखा हवा किछि भी 5 मिनट ब्रेक नेली ना तुम चा ब्रेक हो गला कि सबू ना ना सीबीटी माने एग्जाम ऑफलाइन ने हवा माई ये कौन माने घर कथा तो हाय सांग हाले सांग आसिले देखा हवा खाइबा बुलिबा आज तो स्वप्न देखी दियो ओके ठीक अच्छे पिला माने टिके पीपीटी रे प्रॉब्लम हेची तो पीपीटी आसीबा जाय हमें जोटा किछि नाही जस्ट मजाक करतिली तो आमे जहा थ्योरी डिस्कशन करिवार थिला एबे डिस्कशन करि देबा एंड पीपीटी आसिले हम हमर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करिबा एमती हुए समस्त हुए जो भी माने टिके ब्रेक देले टीचर्स छुआ मानकर आरंभ हो जाए तो एबे पिला माने मते कुह लेवल ऑफ टीचिंग टीचिंग रो केतेटा लेवल अछि कोन कोन आउ को लेवल ले कोन कोन आसी थाए गुड मॉर्निंग हाँ से आस बहुत हसी देला एबे लेवल ऑफ टीचिंग कुआ ओके जने प्रसन्नजीत ओके ठीक अच्छे 3 एबे आंसर दिया समस्ते ट्राई करो लेवल ऑफ टीचिंग लिसा यस 3टा लेवल अछि कोन कोन से लेवल ऑफ टीचिंग अछि आंसर दिया समस्ते मेमोरी लेवल ओके रुद्रप्रिया अंडरस्टैंडिंग लेवल ओके मेमोरी अंडरस्टैंडिंग देन नाउ कौन रिफ्लेक्टिव वेरी गुड ताले एबे कुआ सबुठारु लीस्ट कोउटा अंडरस्टैंडिंग लेवल मेमोरी लेवल ओके मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल कोटा सबुठारु लीस्ट लेवल ऑफ टीचिंग एंड कोटा हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग एई भली भाबने ही तमरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आछे एंड हमें एठे ही डिस्कशन करतबा कोटा लीस्ट एंड कोटा हाईएस्ट वेरी गुड मेमोरी लेवल लीस्ट यस एटा होची लीस्ट इफेक्टिव आउ हाईएस्ट कोटा हाईएस्ट के लिखले न्यू अंडरस्टैंडिंग नो 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 हाईएस्ट होची पिला माने एटा हाईएस्ट होची रिफ्लेक्टिव लेवल लीस्ट मेमोरी लेवल एंड हाई रिफ्लेक्टिव लेवल यस सब बेले मन रखता लीस्ट होची मेमोरी हाई होची रिफ्लेक्टिव लेवल एंड जो मझिया पुओ झिया कहंती सी होची एई जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ओके एटा होची टोटली थॉटलेस मेमोरी लेवल ले थॉटलेस केवल तुमे घोसी घोसी मन रखिबो अंडरस्टैंडिंग टा होची थॉटफुल एंड रिफ्लेक्टिव कोन की हाई थॉटफुल ओके क्लियर अंडर मेमोरी लेवल माने कौन केवल टीचर आसीबे ग्रुप 2 अनुगुल कहार फेर से पढ़ाऊँ मुझे आसिले अनुगुल पचारे कि मेमोरी लेवल ले कौन ही थाए आज टीचर मु केवल बही धरिकी पढ़ाई दे जाऊँगी एंड तमें कौन करुच घोषार लगुच आम जो कहे रट्टा मारिकी केवल गोटे कनसेप्ट को आम मन रखा एग्जामिनेशन जाइए लेखापी तो सहीटा हूँ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग थॉटलेस आम कि भाविलेनी किसी चिंता कलेनी केवल आमको जहाँ दि जाइए एग्जामिनेशन आम घोषीदे एंड एज यूजुअल जाइए लिखिदे आसिले ओके अंडरस्टैंडिंग लेवल माने कौन थॉटफुल माने कौन आमर थॉटा से डेभलप है आम बुझा को चेष्टा कले एंड आम से जिनसा को बुझिक ही मन रखुचे सो दैट अलग कौ सिचुएशन में आमको जब से एग्जाम्पल गोटे पचरा जाए आम से एक्सप्रेस कर से आइडियाटा को थ्रू आवर कम्प्रिहेंशन बा अंडरस्टैंडिंग ओके कंप्यूटर बेस्ड हम विष्णुप्रिया देन हूँ रिफ्लेक्टिव लेवल हाईएस्ट थॉटफुल केमिति रिफ्लेक्टिव माने कौन किए कहि परिबो
yes autonomous development level तुम एग्जाम रे आसुनी बट सी गोटे पार्ट फास्ट पार्टा हूँ autonomous development level टेस्ट किंतु एग्जाम रे आसीबा पॉइंट ऑफ व्यू रो ई तीनटा को प्रीवियसली रिपीटेड होउची किछि इयर्स हैला तो कोटा लीस्ट इफेक्टिव कोटा हाईएस्ट इफेक्टिव कोटा थॉटफुल नुह डायरेक्ट एमती तुम तीनटा ऑप्शन देकी पचारि दउची तो सेथि लागि ही ए क्वेश्चन टा तो रिफ्लेक्टिव लेवल कहले कोन बुझ व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग आंसर दियो समस्ते थिंकिंग ओके लक्ष्मी प्रिया नेक्स्ट के निजे किछि भाबिबो ओके ओके क्रिटिकल थिंकिंग यस रिफ्लेक्टिव थिंकिंग माने कौन तुम्हें तुम थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करबा माने सपोज आज हमर पढ़ा हैला क्वेश्चन आंसर हैला तुम्हें जे कि भाबिबो कि मैम जते क्वेश्चन पचारले रियली सी बी कहिला बोली मु बी देखि के देई देछि ना सतरे मु जानि छि कि एई क्वेश्चन आंसर टा बी हबो बोली ओके तो सही जिनसटा तमें केते करि पाइलो तमें केते न करि पाइलो एई जिनसटा काहे कि हैला एई जिनसटा काहे कि हैलानी तमरो क्वेश्चन आंसर एंड थिंकिंग पावर डेवलप होबो ओके ठीक अछि वेरी गुड समस्त को एबे जिबा कि टाइप्स बा फॉर्म ऑफ और टाइप्स ऑफ टीचिंग कौन होबो एबे आंसर दियो फॉर्म ऑफ टीचिंग बा टाइप्स ऑफ टीचिंग कौन अछि थिंकिंग ऑफ थिंकिंग रिफ्लेक्टिव थिंकिंग सेटा मेटा कॉग्निटिव है जो मा थिंकिंग ऑफ थिंकिंग रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक लेसेस फेयर हबो ना अलगा किछि हबो आंसर दियो तेसिन भाबी के आउथरे आंसर दियो फॉर्म ऑफ टीचिंग कौन हबो यस श्रुति वेरी गुड formal informal and non formal informal and non formal तो एबे तमे माने निजे एनालिसिस करके आंसर दे जे जहा बुझुछ फॉर्मल टीचिंग कोन इनफॉर्मल टीचिंग कोन आ नॉन फॉर्मल टीचिंग कोन फॉर्मल टीचिंग कोन कहबो तार गोटे एग्जांपल इनफॉर्मल कोन तार गोटे एग्जांपल नॉन फॉर्मल कोन तार गोटे एग्जांपल समस्त एग्जांपल सहित आंसर देबा को ट्राई करो फॉर्मल इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल Teaching means academy study like school, okay. Formal school, informal home. Classroom teaching formal, formal family, informal school. Formal means classroom teaching, informal means बाबा रे एते कमेंट मु कहारा जणाकर भी पढिबानी जणाकर पढला बेलको आखिरे त एमितिरे दिटा लगेइची काच यस फॉर्मल टीचिंग माने कोन स्ट्रक्चर थिबो स्ट्रक्चर्ड मेथड थिबो सेतिरे कोन थिबो प्री स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फिक्स थिबा एंड गोटे फॉर्मल सेटिंग बा क्लासरूम सिचुएशन तमे जेमति कहउछ स्कूल एनवायरनमेंट रे हमें लर्निंग प्रोवाइड करबा एंड इनफॉर्मल केमिति हमें कोनोसी भी रास्ता रे चली जाउथबा समय रे भी जो नॉलेज टा गेन करथाव हम साई पड़िसा हुंतु हम फ्रेंड सर्कल हुंतु हम स्कूल एनवायरनमेंट हो हमें जोठू भी लर्निंग टा गेन करूचे सेटा होची इनफॉर्मल जेमति होय बा पेरेंट्स को ठारू तमे जोटा कहलो होम एनवायरनमेंट किबा तुम फ्रेंड्स को ठारू किबा तुमर रास्ता रे तमे जेमति जानुचो कि रास्ता रे बाम पड़े चलीबा दरकार साइकिल सिखुचो कि किछि भी सेई सब गोटे इनफॉर्मल लर्निंग आ नॉन फॉर्मल मींस कोन पिला माने एठी तुमको सर्टिफिकेट भी मिलिबो आमे बेसिकली कहि परिबा नॉन फॉर्मल टा होची एडल्ट लर्निंग बा डिस्टेंस लर्निंग आमे जोटा कहूचे
एडल्ट लर्निंग बा डिस्टेंस लर्निंग जो तुमको सर्टिफिकेट मिलिबो एंड तुमरो सब जिनस प्री स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव मध्ये अछि किंतु 4 वाल क्लासरूम रे तुम माने पढिबो नाही एंड आउ गुटे जिनस तुमर जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फिक्स अछि सेटा फ्लेक्सिबल नॉन फॉर्मल ले तुमर फ्लेक्सिबल हेई कि अलगा जिनस तुमर मध्ये करा जाई परबो सपोज तुम एबे एग्जाम देई पन आउ केबे देई परबो किंतु फॉर्मल सेटिंग रे कोन तुमर जदी एबे एनुअल एग्जाम अछि तुम न देई पले फेल हेई जिवो ओके यस वेरी गुड रॉकी मेहर मो मेंबर पढ़ी थांदी एबे ताहले कुह कि टाइप्स ऑफ लीडरशिप तमरा गोटे सिलेबस रे अछि लीडरशिप तो टाइप्स ऑफ लीडरशिप कोन पिला माने टाइप्स ऑफ लीडरशिप फ्लेक्सिबिलिटी इन नॉन फॉर्मल टीचिंग यस 4 टाइप्स ऑफ लीडरशिप ओके कुआ को टाइप्स रही लीडरशिप रा पिला माने समस्त पार्टिसिपेट करो डिस्कशन कोन करछे मु निजे निजे कहि के पळे पाई कि जणे दि जण पिला कहबे तमे प्रैक्टिस कले ए जिंस गोटे तमर मने रहइबो सेथे लागी ही प्रैक्टिस करछि नले किछि दरकार नाही क्लास एंड करदबा सल्ला पळेबा से जो 4 टाइप जे कोन से 4 टाइप कोन यस ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक लेसेस फेयर आ गोटे कोन 4 टाइप को जम्मू कार तो 4 टाइप सुनी पारुनी समस्त 3 प्रकार कहउछ ताले 4 टाइप केमिति हैला जे 4 टाइप कहउछ से 4 टाइप ता एक्सप्लेन करो 4 टाइप कोन खाली 4 टाइप कहि दिलबो डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक लेसेस फेयर ऑटोक्रेटिक आ अथॉरिटेरियन भीतर डिफरेंस कोन ज्योति प्रभा यस ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक अच्छा ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक एंड लेसेस फेयर ए तीनटा का भीतर डिफरेंस कोन डिफरेंस कोन जल्दी जल्दी आंसर दियो यस वेरी गुड सेमती कहबा गले मु आ गोटे कर देबी विजनरी एबे आंसर दियो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप डेमोक्रेटिक लीडरशिप लेसेस फेयर लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड कोन ना विजनरी लीडरशिप कोन ता माने ऑटोक्रेटिक मीन्स नो लीडरशिप डेमोक्रेटिक मीन्स पब्लिक लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशनल ओके विस्मिता ट्रांजैक्शनल से आ गोटे कहले ओके वेरी गुड लिखिबा ट्रांजैक्शनल आंसर दिया delegating leadership okay आंसर दियो डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक लेसेस फेयर ट्रांसफॉर्मेशनल विजनरी ट्रांजैक्शनल रो माने कोन जल्दी जल्दी आंसर दियो ऑटोक्रेटिक मीन्स लीडर कैन ओके वेरी गुड सुप्रिया ज्योतिस्मिता लेसेस फेयर फुल फ्रीडम टू स्टूडेंट वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशनल मीन्स लीडर मोटिवेट्स इन इंटरेस्टिंग चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन वेरी गुड तेसिन ओके ऑटोक्रेटिक गला ऑटोक्रेटिक मीन्स कोन एज ए टीचर मु जदी तुम लीडर होउची केवल मोर रूल मोर रेगुलेशन रहइबा मु जहा कहली सेटाले स्ट्रिक्ट एडहेरेंस ऑफ रूल एंड डेमोक्रेटिक रे फ्लेक्सिबिलिटी अछि एंड समस्तंकर वॉइस रेज करिवार क्षमता अछि फ्लेक्सिबिलिटी एंड वॉइस रेज करिवार क्षमता अछि डिस्कशन समस्त करिवे फ्री डिस्कशन सब किछि चलिबो एंड लेसेस फेयर रे कोन जेमते से कहिले ज्योतिस्मिता फुल फ्रीडम टू स्टूडेंट full freedom to all the students okay ताले एबे को ट्रांसफॉर्मेशनल ले कोन ना चेंजेस को आमे सपोर्ट करिबा चेंजेस को सपोर्ट करिबा एंड विजनरी कोन गोटे स्ट्रांग विजन बा गोटे एम को रखिकी एम ऑब्जेक्टिव वाइज आमे लीडरशिप स्किल डेवलप करिबा विजनरी ओके
देन ट्रांजेक्शनल माने कौन? यस ऑटोक्रेटिक वन लीडर. Democratic leadership mean where leaders and members are both active. Very good Prashant. By the people, for the people, to the people in the democratic. लक्ष्मी प्रिया पूरा डेमोक्रेटिक रो फुल फॉर्म ही कहि देले. सेमिति नाही तमरो बेसिकली आसीबो ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक एंड लेसेस फेयर. ओके मन रखथाओ एई तीनटे तमरो एग्जाम रे आसुची जहां में मु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करिची. तमरो ए ट्रांसफॉर्मेटिव विजनरी एंड ट्रांजैक्शनल आसु नाही किंतु जानि दैथिबा त तुमको बेटर कि जदी बाय चांस तमरो एग्जाम रे आसे तमे ए जिंसडा करि पारिबो. ओके क्लियर. एबे कुह प्रोसेस ऑफ टीचिंग बाय एजुकेशन. Process of teaching or education. Education कौन केतटा प्रोसेस अछि? Process of teaching or education. Very good जगन. मैम डेमोक्रेटिक आउ थरे कहंदो. यस हाँ किए पचाले रुद्रप्रिया. डेमोक्रेटिक लीडरशिप माने से लीडरशिप रे बोथ लीडर एंड जो माने पीपुल रहउछन ग्रुप ऑफ द पीपुल समस्तंकर समान क्षमता रहइबो. समस्त निज वॉइस रेज करि परिबे. फ्रीली इंटरैक्शन एंड डिस्कशन हबो. सेही उपाय रे ही किछि गोटे डिस्कशन हबो एंड गोटे लीडरशिप स्किल ले तमे जहा भी ग्रुप वर्क करूछ लीडर सहित समस्त मिसिगिरी रही कि जो भी रूल रेगुलेशन फिक्स हबो समस्त सहमति रे फिक्स हबो. एबे कुआ प्रोसेस ऑफ टीचिंग बाय एजुकेशन केतटा अछि आ कोन कोन आ तार काम कौन? प्रोसेस ऑफ टीचिंग जल्दी जल्दी आंसर दियो. नो प्रोसेस जेमती कि बाइपोलर हिंस गोटे देली बाइपोलर गोटे प्रोसेस. एबे तम माने कुह जल्दी आंसर दियो. प्रोसेस ऑफ टीचिंग बाइपोलर ट्राइपोलर टेट्रापोलर क्वाड्रिपोलर मीन स्टूडेंट टीचिंग बाइपोलर ट्राइपोलर क्वाड्रिपोलर. यस पुष्पिता वेरी गुड. देन बाइपोलर रे कोन टीचर एंड स्टूडेंट्स केवल रहिबे. जने टीचर रहिले एंड जने स्टूडेंट्स रहिले. एंड ट्राइपोलर रे कोन टीचर टीचर स्टूडेंट आउ कौन गोटे रहिबो ट्राइपोलर रे. यस बाइपोलर टीचर स्टूडेंट ट्राइपोलर टीचर स्टूडेंट एंड कंटेंट क्वाड्रिपोलर टीचर स्टूडेंट कंटेंट एंड एनवायरनमेंट. वेरी गुड तेसिन. यस अच्छा बाइपोलर प्रोसेस किए देइथिले केही कहि परबो एंड ट्राइपोलर प्रोसेस किए देइथिले. बाइपोलर प्रोसेस किए देइथिले पिला माने बाइपोलर. यस ट्राइपोलर. वेरी गुड जगन. बाइपोलर एंड ट्राइपोलर प्रोसेस किए देइथिले समस्त टिके ट्राई करिया को. बाइपोलर प्रोसेस देइथिले जॉन एडम्स एंड ट्राइपोलर प्रोसेस देइथिले किए जॉन डीवी. ओके बाइपोलर जॉन डीवी देइ नथिले मनु. बाइपोलर देइथिले जॉन एडम्स. ट्राइपोलर देइथिले डीवी. ओके एबे पिला माने आंसर दियो. मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग. मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहले कौन बुझु आमे आ कौन कौन मैक्सिम्स अच्छी टीचिंग रो. मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कौन कौन एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आमे कहले कौन बुझु. समस्ते आंसर देबा को ट्राई करो. मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहले आमे कौन बुझु. यस वेरी गुड ज्योतिस्मिता. निकिता निकिता कहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. ओके गोटे लिखिबा simple to complex. next maxim of teaching कौन? maxim by maxim जी जहा कहूच known to unknown. okay known to unknown.
unknown, inductive to deductive, concrete to abstract. Okay, inductive to deductive, concrete to abstract, okay, analysis to synthesis, whole to part. Okay, analysis to synthesis, whole to part, near to far, then ଆଉ କ'ଣ empirical to rational. Okay, empirical to rational. Okay, seen to ascend, खुशबू एटा अच्छी तो psychological to logical, definite to indefinite. Okay, particular to general. Okay, definite to indefinite, particular to general. ओके एबे आंसर देबाको ट्राई करा एते सारा तो हेई गला ताले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कहले कोन, नोन टू अननोन कहले कोन, इंडक्टिव टू डिडक्टिव कहले कोन, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कहले कोन, एनालिसिस टू सिंथेसिस कहले कोन, होल टू पार्ट कहले कोन, नियर टू फार कोन, एम्पिरिकल टू रैशनल कोन, डेफिनाइट टू इंडेफिनाइट कोन, पर्टिकुलर टू जनरल कोन. Psychological to logical. Okay, easy to hard, simple to complex. बेला माने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स माने मु जेते बेले तुमको पढौची एज ए टीचर मोर रोल रहउची कि छोटो छोटो एग्जांपल तुम माने किछ गोटे बड़ एग्जांपल दबा माई कॉम्प्लेक्स एग्जांपल जहा फळे कि तुम बुझी पारिबो ग्लोबल वार्मिंग. मु जदि डायरेक्ट ग्लोबल वार्मिंग वर्डटा कहबी गोटे छोटो छुआ कोन बुझिबो मते सेठी फास्ट परिवेश प्रदूषण काहेकि होउची तार रीजन कोन कोन सब जिंस जानिबा पर ही मु ग्लोबल वार्मिंग कथा कहिले गोटे छुआ बुझी पारिबो. देन नोन टू अननोन, सपोज मु तुमको कहबी कि तुमर आमे काहे कहूचे छुआटे को क्लासरूम सिचुएशन ने तार रियल लाइफ एग्जांपल तार एक्सपीरियंस सहित आमे ताको पढाइबा काहे कि ना तार रियल लाइफ एग्जांपल तार लोकल कंटेंट बा तार जो जिंसडा रहिची सी से जिंसडा जानिची तो कोन हबो से जो जिंस जानिची सेही जिंसरो जदि आमे अननोन थिंग बुझिबा तार इंटरेस्ट पढिबा आ से इजीली बुझी परिबा. एंड इंडक्टिव टू डिडक्टिव माने कोन माने जो जिनसटा जानिची एग्जांपल लु आमे जिबा डायरेक्ट जोडा मेन फार्मूला बा जनरलाइजेशन रहू अछि. ओके, वेरी गुड प्रशांत. देन रोची कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट. कंक्रीट मीन्स कोन रियल थिंग जो जिनसटा को आमे टच करि पारुचे देखि पारुचे सेही जिनस रु आमे जिबा गोटे एब्स्ट्रैक्ट थिंग. सपोज मु तुमको कहबी एबे गोटे तमे एटा भाबी नियो तमे केमिति भाबिबो तमे फास्ट सेमदी अछि गोटे कंक्रीट एग्जांपल देखिबा परे सिना मु कहबी एई जिनसटा जदि आ सहित मिसला एया हैला ताले भाबी नियो सेही जिनसटा ता सहित मिसिले सेया मध्ये हबो तो तमे सेही जिनसटा भाबिबा पई रेडी हबो. किंतु जदि मु तुमको कंक्रीट जिनस देखेनी आ डायरेक्ट कह देबे एठी बसी भाबी दियो हेमिति तुमको आग अमेरिका रे गोटे पिक्चर न देखै कहबी अमेरिका रे एया अछि तमे केमति भाबिबो तमे तो भाबिबी दबो आम गां रे जहा अछि अमेरिका रे भी सेया अछि. यस क्वेश्चन हबो विष्णुप्रिया टिके वेट करो. देन एनालिसिस टू माने टिके 2 मिनिट वेट करो एबे क्वेश्चन आंसर सेशन करबा 2 मिनिट परे. यस बटम अप अप्रोच जगन तो 2 मिनिट समस्ते वेट करो 2 मिनिट परे ही आमे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करबा.
पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर बुझी होनी पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर माने कौन मैम आ क्वेश्चन हबनी वेट कर तुम मैंने कहली ना टिके वेट कर प्रॉब्लम टिके हेइथिला तो स्टार्ट करबा टिके स्टार्ट करबा एबे जस्ट वेट तो रेडी समस्ते एबे स्टार्ट करबा तो देख एबे हमर फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द प्राइमरी goal of classroom management to maintain silence in the class to complete the syllabus on time or to create कौन है ये यस डिस्कशन हेइथिला पिला माने टिके वेट करो खाली डिस्कशन हेइथिला बट पीडीएफ चेंजेस जो ए सब प्रॉब्लम होची टिके वेट करो सॉरी पिला माने तुमर एते डिस्टर्ब होउची बट टिके प्रॉब्लम हे जे सॉरी पिला माने टिके जस्ट 2 मिनिट वेट करो बार बार पीडीएफ प्रॉब्लम लागी ही प्रॉब्लम होउची इट्स ओके मैम सॉरी एक्चुअली बेले बेले एमती इश्यूज हुए ठीक अच्छे नबा रुद्रप्रिया आज ही डिस्कशन करदे इंपोर्टेंट फुल फॉर्म क्लास आउ 10-15 मिनट लगे क्वेश्चन सेशन पे तापर ही फुल फॉर्म डिस्कशन करवा तो देखा एबे क्वेश्चन ठीक है वाला तो which of the following best reflects a positive attitude towards inclusive education गोटे inclusive education पाई कोटा positive attitude option A teaching only average learners ना option B avoiding differently abled students option C designing lessons to accommodate all learning styles option D focusing only on exam scores कोटा हवा पिला माने C yes option C is the right answer designing lessons to accommodate all learning styles okay very good next a teacher uses sarcasm to discipline students this reflects what constructivist criticism na negative emotional attitude option C positive discipline option D empathy कोडा पिला माने एटा ऑप्शन बी हबो पिला माने नेगेटिव इमोशनल एटीट्यूड सार्केजिम माने कोन
जो थट्टा परिहास कमेंट मारिकी क्लासरूम सिचुएशन ने गोटे पिला को डिसिप्लिन को आनिबा हे तो तोरा एटा होनी हे तू एटा करि परनु सी एटा करि परछु तू तो जो मंडितटा माने जो कोन आमे इमोशनल जिंस को हर्ट करूचे ओके तो सही जिनसटा होची कि ए टीचर यूजेस sarcasm टू डिसिप्लिन स्टूडेंट दिस रिफ्लेक्ट व्हाट नेगेटिव इमोशनल एटीट्यूड यस मैम को वॉइस टा हाई लो एथि लगी हे जाउची कि साइड रूम रे गोटे क्लास टे चलची एंड मो वॉइस हाई पिच हे गले से पिला मन को भी डिस्टर्ब होची तो जेते बेले मने पडुनी वॉइस टा हाई पिच हे जाउची एंड जेते बेले मने पडुची सेते बेले लो पिच हे जाउची भल्ला मार्क करूचो Okay, next question. A teacher who believes that learning never stops exhibits which attitude? Authoritarian, laissez-faire, lifelong learner or static thinker? कोड हबा पिला माने? Very good. Yes, lifelong learner. Next इबा कि what does a negative attitude towards education often results in? Higher students motivation, creative classrooms, resistance to change, active engagement. कोड हबो yes ऑप्शन सी रेजिस्टेंस टू चेंज नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन माने कोन आज ए टीचर तमे कोनसी भी चेंज को हेजिटेट फील करिवो तमे रेजिस्ट करिवो बा चेंज होबा को चाहिबो नाही यस नेक्स्ट जीवा 5 नंबर टीचर्स हु बिलीव एजुकेशन इज ओनली अबाउट स्कोरिंग मार्क्स यूजुअली कोन हे थाए सेटा प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एनकरेज रोट लर्निंग ना मोटिवेट क्यूरियोसिटी ना डेवलप क्रिएटिविटी जो टीचर भाबी थांदी केवल टीचिंग माने होची पढ़ी दबा और मार्क पुंजे रखी दबा तो सेटा कोन सेटा क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करे ना एनकरेज रोट लर्निंग ना मोटिवेट क्यूरियोसिटी एमंग स्टूडेंट्स ना डेवलप क्रिएटिविटी एमंग स्टूडेंट्स वेरी गुड किए डी कहला पिट दाकू ऑप्शन बी एनकरेज रोट लर्निंग जने कहउछन खाली घोसी के लिखि दियो ता माने कोन से एनकरेज करूछन रोट लर्निंग को केवल टीचिंग माने लर्निंग माने स्कोरिंग नु लर्निंग माने होची 360 डेवलपमेंट बा होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड ओके नेक्स्ट 6 नंबर व्हाट इज वन आउटकम ऑफ ए टीचर हैविंग ए ग्रोथ माइंडसेट गोटे ग्रोथ माइंडसेट रे गोटे टीचर रा कोन हैबिट रही फोकस ऑन फेल्युअर रिजिड इंस्ट्रक्शन एनकरेजिंग एक्सपेरिमेंटेशन डिस्करेजिंग फीडबैक कोडा हबो ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी सी ओके ऑप्शन सी एनकरेजिंग एक्सपेरिमेंटेशन वेरी गुड बहुत बढ़िया यस ऑप्शन सी नेक्स्ट मैम कि व्हिच बिहेवियर शोज ए डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स इन क्लास को बिहेवियर टा डेमोक्रेटिक एटीट्यूड देखाई थाए पिला माने ऑप्शन ए टीचर डिसाइड्स एवरीथिंग बी स्टूडेंट्स गिव फीडबैक सी स्टूडेंट्स स्टे साइलेंट डी पनिशमेंट फॉर क्वेश्चंस कोडा है बेटा डेमोक्रेटिक एटीट्यूड कोडा है यस ऑप्शन बी स्टूडेंट्स गिव फीडबैक वेरी गुड नेक्स्ट मैम 8 नंबर व्हाई इज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एसेंशियल फॉर टीचर ऑप्शन ए इट डिलेज लेसन डिलीवरी ऑप्शन बी इट रिड्यूसेस टीचर्स अथॉरिटी ऑप्शन सी इट प्रमोट्स सेल्फ इंप्रूवमेंट ऑप्शन डी इट वेट्स टाइम C. Yes, it promotes self-improvement. Next, ma'am. Now, number, if a teacher supports peer tutoring, they believe in what process? Competition only, collaborative learning, na passive instruction, na hierarchical learning. Koda? Yes, Sanjivani. C, B. ऑप्शन बी कोलाबोरेटिव लर्निंग पीयर ट्यूटरिंग माने कौन कोलाबोरेटली जेते बेले आपण माने ग्रुप वर्क रे सांग मानक सहित पढौछंदी सेटा पीयर कोलाबोरेशन सो दैट पीयर लर्निंग पीयर ट्यूटरिंग जहा कि कोलाबोरेटिव लर्निंग बा ग्रुप वर्क को इंडिकेट करू अछि नेक्स्ट 10 नंबर व्हिच बिहेवियर शोज ए डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स इन क्लास को बिहेवियर टा गोटे डेमोक्रेटिक एटीट्यूड सबु देखौची कि टीचर्स डिसीजन एवरीथिंग ओके देन स्टूडेंट्स गिव फीडबैक ना स्टूडेंट स्टे साइलेंट ओनली ना पनिशमेंट फॉर क्वेश्चन जदि तुम किसी क्वेश्चन पचारुच तले तुमको पनिशमेंट मिलुची यस 10 नंबर अब स्टूडेंट्स गिव फीडबैक व्हिच बिहेवियर शोज ए डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इन स्कूल
then a teacher actively seeking better teaching method shows गोटे टीचर्स actively teaching method based दियंती कोन disinterest in students ना genuine teaching interest जदि तांकर genuine interest अछि ना job dissatisfaction जदि तांकर job रो dissatisfaction अछि ना avoidance of planning ना planning रो avoidance पिला माने समस्ते बेटर हबो तम माने आरआई को कोन करो मेल करो ओके ऑप्शन बी genuine teaching interest नेक्स्ट बा कि interest in teaching is reflected in what method arriving late frequent absenteeism creating engaging activities ignoring कोन student questions कोडा हबो बेटा interest in teaching is reflected in what method arriving late frequent absenteeism creating engaging activities d ignoring students questions अरे बाबा रे yes option c creating engaging activities कोन होई थाए engage जेतबेले छुआ माने हेबे तांकर टीचिंग रे इंटरेस्ट आसीबो सेटा रिफ्लेक्ट हबो yes very good next 13 नंबर पैशन फॉर टीचिंग कैन बी सीन व्हेन टीचर्स पैशन टीचर केतेबेले शो करिवो ना रीड अलाउड फ्रॉम बुक्स ओनली जेतेबेले बुक्स रो अलाउड करके लाउडली पढिबे ना स्टिक टू आउटडेटेड मटेरियल केवल सेही आउटडेटेड मटेरियल ले हमें रहिबा देन यूज इनोवेटिव डिजिटल टूल्स केवल इनोवेटिव डिजिटल टूल्स मध्ये रहिबा अवॉइड पेरेंटल इंटरैक्शन को अवॉइड करबा एडमिट कार्ड मोस्ट प्रोबेबली एडमिट कार्ड आसेनी सिटी इंटिमेशन आसी पिला माने yes yes option c use innovative digital tools 14 नंबर इंटरेस्ट इन टीचिंग इज लाइकली टू डिक्लाइन इफ इंटरेस्ट टीचिंग रे डिक्लाइन हे जिवो जदी द स्कूल सपोर्ट्स इनोवेशन स्कूल जदी इनोवेशन को सपोर्ट करची ना देयर इज ए लैक ऑफ रिकॉग्निशन माने रिकॉग्नाइज करा जाउ नाही प्रेज करा जाउ नाही तार भलो काम पई ना स्टूडेंट सो क्यूरियोसिटी जदी स्टूडेंट माने क्यूरियोसिटी शो करूछनी ना टीचर्स आर मेंटर्ड जदी टीचर माने मेंटर्ड हिसाब रे रहउछंदी yes obviously option b there is a lack of recognition जदि गोटे टीचर को तार भलो काम पई recognition मिलु नाही ताहले तार टीचिंग पई इंटरेस्ट आसीबो नाही lack of interest रहिबो ओके नेक्स्ट जिबा कि टीचर्स विथ हाई इंटरेस्ट इन देयर प्रोफेशन यूजुअली कौन करिथांदी अवॉइड एक्सपेरिमेंट को अवॉइड करिथांदी स्टिक टू सिलेबस ब्लाइंडली माने केवल सिलेबस को धरिकी रहिथांदी ऑप्शन सी एनकरेज इंक्वायरी ना इंक्वायरी को एनकरेज करैथांदी ना ऑप्शन डी डिस्करेज डिबेट ना डिबेट को डिस्करेज करैथांदी कोटा हबो पिला माने यस एनकरेज इंक्वायरी The teachers with high interest in their profession usually encourage inquiry by hands-on activities by learning by doing method रे पिला माने को पढेबा पई भलो पाई थांदी जोडा कि चाइल्ड सेंट्रिक मेथड नेक्स्ट जिबा 16 नंबर रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ स्ट्रांग टीचिंग इंटरेस्ट कोन करि थाए ऑप्शन ए टीचर रनिंग ए फ्री वीकेंड कोचिंग क्लास ना ऑप्शन बी ए टीचर हु स्किप्स क्लासेस ऑप्शन सी ए टीचर हु गिव्स सेम नोट्स एवरी ईयर ऑप्शन डी ए टीचर हु अवॉइड्स कम्युनिकेशन कोडा हबो पिला माने very good yes option a is the correct answer next jiba 17 number teacher student bonding is strongest when kon ketta bele bonding ta strongest haba teacher is indifferent option b teacher ignores question option c teacher shows interest in students lives option d teacher follows strict routines koda haba teacher student bonding is strongest when ketta bele strong haba teacher students ro bonding ta ketta bele pila mane yes option c teacher shows interest in students life 18 number how can a teacher improve interest in their profession निजर प्रोफेशन ने टीचर केमिति इंप्रूव करिवे ऑप्शन ए बाय अवॉइडिंग स्टूडेंट्स फीडबैक ऑप्शन बी बाय एंगेजिंग इन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस ऑप्शन सी बाय रिड्यूसिंग रीडिंग ऑप्शन डी बाय कॉपिंग लेसन्स कौन हबो yes option b by engaging in reflective practices very good बहुत बढ़िया एमती ही जोश दरकार हुई स्टेटमेंट इज ट्रू एई तक स्टेटमेंट भितरु कोटा ट्रू पैशन फॉर टीचिंग कैन नॉट बी डेवलप्ड गुड टीचर्स अवॉइड चेंज ना इंटरेस्ट ग्रोज विथ एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन ना डी पैशन डिक्लाइन्स विथ ट्रेनिंग कोटा
पैशन माने जोटा तुम पैशनेट कि मुझे जॉब करने इंटरेस्टेड पैशन एंड प्रोफेशन तुम इंटरेस्ट एंड तुम प्रोफेशन गोटे सी 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 यस इंटरेस्ट ग्रोज विथ एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन नेक्स्ट जा 20 नंबर वेरी गुड बहुत बढ़िया समस्त बहुत बढ़िया बहुत तो 20 नंबर ए टीचर क्रिएटिंग क्लासरूम रूल्स विथ स्टूडेंट सोज व्हाट अथॉरिटेरियन लीडरशिप ना पार्टिसिपेटरी लीडरशिप ना पैसिव लीडरशिप डी ऑटोक्रेटिक बिहेवियर कोटा हम पिला माने ऑप्शन बी पार्टिसिपेटरी लीडरशिप कहीं ना देते टीचर क्रिएटिंग क्लासरूम रूल्स विथ स्टूडेंट्स स्टूडेंट मान सहित मिसिकी जितेबाला टीचर क्लासरूम रूल करुँचे पार्टिसिपेटरी लीडरशिप होची से स्टूडेंट को सहित पार्टिसिपेट करके ही रूल रेगुलेशन फिक्स कले नेक्स्ट जा 21 नंबर व्हिच इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ ए गुड एकेडमिक लीडर कोटा गोटे गुड एकेडमिक लीडर क्वालिटी नुहे विजन कोलाबोरेशन इम्पल्सिवनेस ना एम्पैथी कोटा आंसर दिया कोटा हम यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट जा 22 नंबर इफेक्टिव ग्रुप मैनेजमेंट इन क्लास प्रमोट्स व्हाट नॉइज एंड चोश ना सोशल आइसोलेशन ना एंगेजमेंट एंड कोऑपरेशन ना कंपटीशन ओनली Yes, option C, engagement and cooperation. Next, a good classroom leader will what? Allow only toppers to speak. Now, ensure every voice is heard. Now, teach without interaction. Now, focus on rules only. Koda pila mane? Very good. Jyotismita. Yes, 23 नंबर बी एंसर एवरी वॉइस इज हियर जे गुड लीडर से क्लासरूम में सबू पिलांकर आंसर सुनिबो एंड यस एज ए टीचर तमर रोल पिला माने केबे भी पिला मानो को क्लासरूम में डिमोटिवेट करबनी जदि भी गोटे पिला कहि पारुनी तमे हेडी कहबनी हेस तू जाननु तू कह सेमते केबे कहबनी जे भी कहूची ताकू प्रेज करबो यस ओके ओके कुह तमे भी कहि पारिबो यस ठीक होची आ टिके ट्राई कर तुमे एमिति एनकरेज करैबो एंड सबू पिलार वॉइस को एज ए टीचर तमे सेठी माने पेशेंसफुली सुनिबो सेटा होची तम ड्यूटी ओके नेक्स्ट कि 24 नंबर इन ए ग्रुप टैक्स ए टीचर असाइन्स रोल्स दिस हेल्प्स इन व्हाट कॉन्फ्लिक्ट टाइम वेस्ट रोल क्लैरिटी ना लेजीनेस कोडा सी यस ऑप्शन सी दैट इज रोल क्लैरिटी 25 नंबर real life a teacher forms eco clubs in schools to promote leadership what does this show authoritarianism leadership building syllabus pressure or detachment very good एटा आंसर दिया 25 नंबर yes 25 नंबर बी लीडरशिप बिल्डिंग नेक्स्ट जीवा 26 नंबर which quality makes a teacher an effective leader option A empathy option B aggression option C strict silence option D detachment कोड हबो 26 नंबर कोड हबो यस श्रुति संजीवनी जगन यस एम्पैथेटिक बा एम्पैथी देन 27 नंबर कि a student with low social adjustment is likely to what lead group activities avoid group interaction participate actively ना volunteer ideas कोटा डिटाचमेंट माने तमे जो डिटाच हेजबो गोटे एक्टिविटीज बा अलगा हेजबो तमर से प्रति आग्रह बा इंटरेस्ट आसीबो नाही तुमे पूरा आइसोलेट हेकी से एक्टिविटीज रो रहइबो ओके यस ऑप्शन बी अवॉइड ग्रुप इंटरेक्शन नेक्स्ट which of the following is a sign of poor emotional adjustment in children कोटा active listening option B clear communication option C sudden aggressive outburst option D volunteering for activities कोटा है वो पिला माने C yes sudden aggressive outburst yes next बा
What should a teacher do if a student constantly seeks attention through disruptive behavior? Punish them in front of peers or understand the emotional need behind the behavior? Option C, ignore them completely. Option D, send them out of class. Koda haba? Yes, option B, understand the emotional need behind it. Then socially adjusted students are usually what? Option A, isolated. Option B, cooperative and friendly. Option C, disobedient. Option D, emotionally unstable. Yes, cooperative and friendly. Next, which of the following is पिला माने तो एठी तम मानकर आजिर सेशन आमर कंप्लीट हेइची तो थैंक यू एवरीवन फॉर कोऑपरेटिंग मी एते लॉन्ग टाइम रो 1.5 घंटा धरिकी एंड मझिरे भी डिस्टर्बेंस हैला तम माने बहुत सपोर्ट करिचो पेशेंसफुली रही की क्लास करिचो समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद एंड समस्त को ऑल द बेस्ट क्लासेस माई एंड तम मानकर जो रही कि तम मानकू मु किछि इंपोर्टेंट जो गुडा रही एब्रिविएशन बा फुल फॉर्म रही पिला माने एई क्लासटा सरीले एई यूट्यूब क्लास रा लास्ट रे समस्त कमेंट बॉक्स आज संध्या सुधा चेक करबो समस्त आसीबो संध्या सुधा कमेंट बॉक्स चेक करबो मु जेतक इंपोर्टेंट एब्रिविएशन अछि कमेंट बॉक्स रे लिखि देइथबी एंड तमर जेते थ्योरीज अछि एंड थ्योरीज रा ऑथर एई सेशन नो लास्ट रे सरीला पारे संध्या बेल को चेक करबो मु संध्या बेल को तमर कमेंट बॉक्स रे सब किछि फुल फॉर्म सहित सब किछि ऑथर एंड थ्योरीज सहित पुट करि देइथबी कमेंट बॉक्स रे तमे सेइठू पढी नबो ओके तो समस्त को थैंक यू कि एते सपोर्ट पाई एंड एते कांस्टेंट बसिलो वेट कर पिला माने जो दिन भी क्लास हब तमे यूट्यूब चैनल सहित कनेक्टेड थाओ तुमको आगुआ जना हब सब क्लास हब इंग्लिश भी हब रीजनिंग भी हब तुम माने वेट करो ओके तो आज क्लास को एठी एंड करबा थैंक यू एवरीवन।